बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। फोर्ट बेंड काउंटी प्राइमरी इलेक्शन, उम्मीदवारों ने ह्यूस्टन मीट एंड ग्रीट में कम्युनिटी से मुलाकात की। फोर्ट बेंड काउंटी के प्राइमरी इंतखाबात करीब आ रहे हैं और मकामी उम्मीदवार कम्युनिटी के साथ राब्ता बढ़ा रहे हैं। इस सिलसिले में एक अहम तकरीब ह्यूस्टन एंटरप्रेन्योर्स क्लब मीट एंड ग्रीट का इनेकाद हुआ, जो 2 फरवरी 2026 को माई कुलाची रेस्टोरेंट शुगरलैंड टेक्सास में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में वोटर्स को बराह रास्त उम्मीदवारों से मिलने और इनके ख्यालात जानने का मौका मिला। ये मीट एंड ग्रीट ह्यूस्टन एंटरप्रेन्योर क्लब HEC की जानिब से मुनक्किद किया गया ताकि कम्युनिटी में शहरी शऊर और बाखबर वोटिंग को फ़रोग दिया जा सके। इसने उम्मीदवारों और आवाम के दरमियान एक खुला और आसान फोरम फराहम किया। तकरीब में कई उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें शामिल थे जज RG ब्रेम, जज जूली मैथ्यू, जज क्रिस्टियन बसेरा, मुजफ्फर वहरा, नबील शाइक, शाह हलीम, सारा खान और ओनील विलियम्स। जज क्रिस्टियन बसेरा इस तकरीब में नुमायां शरीक जज क्रिस्टियन बसेरा थे, जो फोर्ट बेंड काउंटी जज के उम्मीदवार हैं। उनके पास 25 साल से ज़्यादा कानूनी और अदालती तजुर्बा है, जिसमें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, प्राइवेट अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ओहदे शामिल हैं। इनकी मुहिम का महवर इंसाफ, हिफाजत, शफाफियत, इखलाकी क़यादत और कम्युनिटी की खिदमत है। जज बसेरा ने फोर्ट बेंड काउंटी फेलोनी मेंटल हेल्थ कोर्ट में इस्लाहात पर रोशनी डाली, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और वर्चुअल मीटिंग्स, जो काम की रफ्तार बढ़ाने, इंसाफ तक रसाई आसान बनाने और टैक्स दहिंदगान के पैसे बचाने में मददगार हैं। वो कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ और गरीब फैमिली सपोर्ट और लिटरेसी जैसे मसाइल पर भी सरगर्म हैं। बात करते हैं सारा खान की। तकरीब में सारा खान भी शामिल थी, जो फोर्ट बेंड काउंटी ट्रेजरर के उम्मीदवार हैं। सारा खान ने बैचलर डिग्री बिजनेस मैनेजमेंट और कॉमर्स और मास्टर्स डिग्री क्रिमिनल जस्टिस यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से हासिल की है। उनका तजुर्बा सेल फोन स्टोर्स की कामयाब मैनेजमेंट, $1 मिलियन की फाइनेंस और रोज़ाना ऑपरेशंस चलाने में है। पब्लिक सेक्टर में भी वो डिस्ट्रिक्ट क्लर्क ऑफिस के रोज़ाना के ऑपरेशन संभाल चुकी हैं। उनकी मुहिम का महवर माली जिम्मेदारी, शफाफियत और टैक्स दहिंदगान के पैसे का मौसर इस्तेमाल है, और वो दिन अव्वल से बेहतरीन सर्विस देने की तैयारी रखती हैं। दीगर उम्मीदवार और इवेंट का मकसद, तकरीब में दीगर अदालती और काउंटी सतह के उम्मीदवार भी मौजूद थे, जिन्होंने अवामी तहफ़्फ़ुज़, अदालती इंसाफ, माली नज़्मो ज़ब्त और मकामी हुकूमत की जिम्मेदारियों के बारे में बात की। हाज़रीन को मुख्तलिफ उम्मीदवारों के ख़यालात सुनने और सवालात का जवाब देने का मौका मिला। फोर्ट बेंड काउंटी के प्राइमरी इंतखाबात में अर्ली वोटिंग 17 फरवरी ता 27 फरवरी 2026 होगी, जबकि इलेक्शन डे 3 मार्च 2026 है। ऐसी कम्युनिटी फोरम्स वोटर्स और उम्मीदवारों के दरमियान फासले को कम करने, मुकालमा बढ़ाने और जमहूरी हिस्सादारी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आइए सुनते हैं सारा खान को, जो फोर्ट बेंड काउंटी ट्रेजरर की उम्मीदवार हैं, और वो बता रही हैं कि किस तरह माली जिम्मेदारी, शफाफियत और अवामी खिदमत के लिए काम करेगी। इसके बाद सुनते हैं जूली मैथ्यू को, जो अपने ख्यालात और तरजीहात फोर्ट बेंड काउंटी प्राइमरी इलेक्शन के लिए बयान कर रही हैं। You all know my name is Sarah Khan and I'm running to be your next Fort Bend County Treasurer. I am running to connect Fort Bend County Treasurer's office with the citizens of Fort Bend County and to restore public trust on government. I completely strongly believe that the residents of Fort Bend County deserve to know how their money is being managed. I have a bachelor's degree in business and accounting and master's in criminal justice from University of Houston, from the College of Public Service. I want to tell you a little bit about my background. I already had bachelor's in business when I came to the United States of America as an immigrant.
I started my own business. My journey was the same as all of y'all. All of us, some of us come here from another country as an immigrant. We do all kinds of odd jobs, and then when God gives us the opportunity, because of our hard work, we excel, we go on the next level. And that's exactly my story. Nothing different than me. I am a single mother. I worked hard. I played by the rules. And God gave me the opportunity to open my first cell phone store with Cricket Communications. And that was the day when I never looked back. I opened one store after the other in Houston, Texas. I went to Corpus Christi, McAllen, Brownsville, and then I went nationwide, St. Louis and Chicago. When I sold my company with Cricket Communications, I was the owner of 57 stores nationwide. Metro PCS launched. Metro PCS was only doing business in the city of Dallas, Texas. When they got the license to launch in Houston and the rest of the cities in Texas, they reached out to me, and that's when the opportunity was too good to be true. So I sold my business and I jumped into Metro PCS. Once again, with and I had a couple of other business partners. I think we all know that we need to give the credit when it's truly deserved, when someone deserves it. So I had two other investors and my business partners, and we grew to 148 stores nationwide with Metro PCS, and I became the #1 dealer in 2015. Yeah, and after that, there was no looking back. I was a community servant. Many of you all know me. I have always served our community. In 2018, I realized that my son was already grown. He was 18 years old, and I felt like something is lacking in my life. My passion is in community service, so I sold my entire business, and I wanted to run for the public office. But I truly believe that you have to be prepared, especially being a South Asian woman. I want to represent the citizens of Fort Bend County that have showered so much love for me. And my biggest goal is when I become, inshallah, the first the female South Asian Fort Bend County Treasurer. This is my vision. The first thing that I'm going to teach my staff. I am a representation of all of you. If we don't get active and we don't go out and vote, our community loses power. You know where politicians go? They go where the power is. They go where the votes are. Have you ever seen this many politicians show up in a booth ever before? Prior to 2018, those of you who were active prior to 2018 in the political field, did you ever see so many politicians active before? There's power in the South Asian community. We have wealth in the South Asian community. We're able to move things in the South Asian community. I need you to recognize that. We can do things if we stick together. Not Muslim, not Indian, not Christian, not Pakistani, not Indian, not Bangladeshi, South Asian. We have to see each other as one. That's the only way that we're going to have that power that we need within our community. And that's important. Don't let anyone tell you otherwise. We can do it if we stick together to get our own elected to seats within the county. We need to realize our potential because our children also need representation. One of the things I recognize is that I don't want to be seen as a perpetual immigrant. I am a United States citizen. I am an American just as much as anybody else. I became a judge in 2018 and had the privilege of being one of the first South Asians elected countywide in Fort Bend County, which paved a lot for the future community, our community members to be more active and get involved. So I was elected to a general jurisdiction court. I was the first Asian American elected, along with Katie George at the time, to a countywide seat. So we've done a lot with the county. I sit over a general jurisdiction court that handles civil, criminal, probate, garnish, and mental health, juvenile, justice of the peace, appeal, you name it, we handle it. So every single citizen of Fort Bend County, at some point or another, will have to go through the county court system. And I am a representation of all of you. If we don't get active and we don't go out and vote, our community loses power. You know where politicians go? They go where the power is. They go where the votes are. Have you ever seen this many politicians show up in a booth ever before? Prior to 2018, those of you who were active prior to 2018 in the political field, did you ever see so many politicians
power in the South Asian community. We have wealth in the South Asian community. We're able to move things in the South Asian community. I need you to recognize that. We can do things if we stick together. Not Muslim, not Indian, not Christian, not Pakistani, not Indian, not Bangladeshi, South Asians. We have to see each other as one. That's the only way that we're going to have that power that we need within our community. And that's important. Don't let anyone tell you otherwise. We can do it if we stick together to get our elected to seats within the county. We need to realize our potential because our children also needs representation. One of the things I recognize is that I don't want to be seen as a perpetual immigrant. I am a United States citizen. I am an American just as much as anybody. देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।